Yes, everyone, please confirm my screen is visible. So, okay, before we start, everybody please tell me, have you done the database program part that we discussed in our yesterday's session? Ma'am, program में error आ रहा है. Okay, Vaishnavi, can you please share the screen? Abhijit, you may stop presenting, huh? Ma'am, is it visible? Yes. ये रन करने के बाद कैटेगरी नहीं, कैटलॉग है. ओके, एक मिनट. ओके, हेलो जी. ओके, अभी रन करके देखो क्या? ये डेटाबेस का नाम कनेक्शन है. यस. ओके. Integrated security is true. Okay, try this. ये आया था ऐसे. Keyword not supported. Data source. S capital. ओके. SOURC. मैम, ये नहीं हो रहा है. ये क्रॉस पे क्लिक करो ना. बंद कर दो. हाँ. SQL कनेक्शन कौन? अरे वो एरर को थोड़ा हटाओ ना. हाँ, रिमूव दैट. हाँ, रिमूव. हाँ. यस, कॉन डॉट ओपन इज मिसिंग ना. सो लाइन नंबर 17. हाँ, उसको वहां से कट करो. एग्जीक्यूट करने से पहले कनेक्शन ओपन करना है. ओके. कंट्रोल F. हाँ, पेस्ट करो वहां पे. कंट्रोल F5 प्रेस करो. कंट्रोल F5. यही आ रहा है. डेटा सेव करो एक बार. हाँ, कर लिया. डेटा स्टोर क्यों दिखा रहा है? क्लोज करो. बिल्ड में जाओ. बिल्ड ऑप्शन दिख रहा है ऊपर मेनू में. हाँ, बिल्ड में जाओ. वहाँ पे क्लीन सॉल्यूशन है ना, उस पर क्लिक करो. डिबग वाले ऑप्शन में जाओ. हाँ, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करो. मैम, ये एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा अभी. रुको ना 2 मिनट. ओके. System cannot find the file specified. कनेक्शन स्ट्रिंग. इसको बंद करो. डेटाबेस दिखाओ अपना. एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस.
कनेक्शन स्ट्रिंग का ही एरर है, तो Okay. ठीक है, इसको टाइम लग रहा है, तो वापस देखती हूँ हाँ थोड़ी देर से. हाँ चलेगा. You can stop sharing. So please confirm everyone, my screen is visible. Yes, we were discussing this part, right? Where we can use a parameterized query. See what happens. Let me just explain with an example. Suppose I want to perform an update operation. Okay, so we need to write the update query. So our update query will be like this: update emp set ename, and that too we are writing in a pair of inverted commas. When we are writing it in C sharp, ename is equal to say Abhay, comma salary is equal to something something, where eid is equal to like this when we are writing the query. So here we are just passing the hard coded values, correct? Everywhere I have just used the hard coded value. What if we are collecting the data from the user? Then what we will do? We have to embed those values into this query, correct? Are you understanding what I am saying? When you see this query, you will find that everything that I have written here is a hard coded value. But what if I want to collect the information from the user? So in that case, I will have ename as one variable, then salary as another variable, and eid is another variable. So we need to embed these three things over here. तो वो कैसे लिखेंगे? So I need to close this ename. समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा हमको. ये सैलरी लिखा है ना, सैलरी की जगह क्या आएगा? द वेरिएबल सैलरी. सो दिस इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. ऐसा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखो. अपडेट emp set ename is equal to some name I am writing here. Salary is equal to like this, where the id is equal to 101. I do not want to use the hard coded value. So what we are going to do, instead of the hard coded values, we will have to insert the variables here. तो यहाँ पर ename चाहिए, यहाँ पर salary चाहिए, और यहाँ पर eid चाहिए. करेक्ट है? Now this is the string, so we have to use this part as a string. तो वही चीज मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे पूरा ये inverted comma में आ जाएगा. Then we have to use ename over here, which is a variable. So variable plus string, do a concatenation here, again plus. फिर ये वाला जो portion है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. This part is here. Can you see this? Single quote, comma, salary is equal to. That will go in a pair of double quotes. Plus salary, plus. Then this part. दिख रहा है? ये पूरा inverted comma में आएगा. So obviously you can understand that this is a little bit complex approach. अब इसी को हम थोड़ा सा simplify करके फिर से लिखते हैं. So what I'm going to write is update emp set ename is equal to @enm, comma, salary is equal to @sal, where eid is equal to @id. Like this if I'm writing. So don't you think this query is much more simplified than the one we wrote earlier? So this approach is known as a parameterized query. ठीक है, इसको ही हम parameterized query कहते हैं. So let's now execute this one. So yesterday we were doing this part. String SQL delete from department where did is equal to
समथिंग यू हैव टू राइट हियर, जो भी नाम आप लिखो यहाँ पर. So for this is a parameterized query now. So for this, we have to create the object of SQL parameter. So SQL parameter P1 is equal to new SQL parameter. P1 dot parameter name. ये मुझसे मिस हुआ था. पैरामीटर नेम जो है वो ये वाला नाम यहाँ पे लिखना है. Now it's data type. So here we have to use DB type. This is not like C sharp. वो internally उसको SQL server में convert करेगा. इसलिए p1.db type is equal to system.data.db type int32. आप यहाँ int32 लिखो, वो internally उसको SQL server data type में convert करेगा. And here you can see I am passing the value. Again I am using hard coded value. You can accept it from the user. Now we are writing delete query and now execute this query. कैसे लिखा है देखो, SQL command is equal to new SQL command cmd.parameters.add p1. You have to pass the p1 parameter and then execute the query. So let me just cross check here. Right now these are the records that we have. Suppose I want to delete the 108 record number. So I will change this to 108 and this is now my main method. Record deleted successfully. And if I just go ahead and execute this, can you see here 108 is missing. Let me do it one more time and this time I will use the insert operation. तो insert अगर हमने किया तो बहुत सारे, एक मिनट. So if I am going for insert operation, I will have to add multiple parameters, right? So let's try this out. या फिर ये employee इसको क्या हो गया? मेन किया कि नहीं मैंने उसको? हाँ. This we have already executed. Now, as I said, let's try this. Public static void main. Now I am purposely writing the whole query. I will not copy the code from here. Parameter. So very first thing what you have to do is create a string that is your connection string. So how to create the connection string? Data source is equal to dot for the current machine. Initial catalog is equal to Armstrong. Integrated security is equal to true.
So we create the object of SQL connection, and then just write here con.open and con.close. वैष्णवी, you also try this. ठीक है, सिर्फ पहले इतना लिख के रन करके देखो, तुम्हारा कोड रन होना चाहिए. If it is working fine, then you go for the other queries. That will tell us whether our हो गया था ना. हाँ, तो तुमने ये गलत लिखा था, ये प्रॉपर अच्छे से याद रखो. So my code is working fine. There is no error. That means there is no problem with my connection string. Next thing is we have to go for string SQL. So this time, as I said, we want to perform insert into DPT, dname, comma, d location, because did is auto increment. Values. अब values के लिए हम क्या लिखेंगे? @dname, comma @d location. ऐसा लिख सकते हैं. This is now the parameterized query. Understood everyone? तो कितने पैरामीटर्स हो गए यहाँ पर? 2. इसलिए आपको 2 बार SQL पैरामीटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. P1 is equal to new SQL parameter. Now I am just writing it step by step. बाद में आप उसको डायरेक्टली एक ही बार कंस्ट्रक्टर में भी दे सकते हो. This is just so that you remember what all information we have to pass. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देंगे? पैरामीटर नेम. तो हमारे फर्स्ट पैरामीटर का नाम क्या है? What is the name of the first parameter? @dname. @dname. ठीक है. Then p1 dot the db type. तो पहले वाले पैरामीटर का डेटा टाइप क्या होगा? It will be string. So db type dot string. Now when we are using a string, at that time we also have to mention the size. That is important. So at least 20 characters is the size. Varchar 20 लिया है ना हमने, तो string आएगा तो size देना है. बाकी integer वगैरह में size नहीं दिया तो चलता है. And p1 dot, the next thing is the value. So what value you want to insert? So let's say I want to just write here new DPT. That is the department I want to insert. ये समझ में आया? This is the first parameter I have created. On the similar lines, we will create the next parameter. So the next parameter name is DLOC string 20, and the location is suppose Nasik. So cmd dot, sorry, yeah, I did not create SQL. Now I am creating the object of SQL command, where the first parameter that I need to pass is the command text followed by connection. तो command text अपना वो string है, that is SQL, comma the next parameter is the connection object. Now cmd dot parameters dot add. So first parameter is p1. cmd dot parameters dot add p2. Like this, we have added the 2 parameters, and finally we will now go for con dot open. हमने already लिख रखा है. ये देखो, ये con dot open पहले आना चाहिए. उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना है. cmd dot execute. Which category? This will be in the non query category. If count equal to 1, console dot write line record added. Some message I'm giving. Okay, and once we are done, we need to close the connection. So let's execute this task.
You got the message record added. So now let's execute. Can you see here? 109 new department Nasik is visible here. So everybody understood the parameterized query technique? Now this whole thing we will do using stored procedures. Okay, अभी जो हमने ऑपरेशन किया वो सारा अब हम stored procedure से करेंगे. So let me just change this name to parameter insert. Okay, so now what I'll do is I'll create a new file, not in the same file. Let me name it as storedprocedure.cs. So again, we will require SQL connection con is equal to, sorry, public static void main. The first two lines will still be the same, so we'll just copy these two lines. Now we need a bunch of stored procedures. तो पहला जो stored procedure, sorry, पहला जो हमारा stored procedure है वो किस लिए है? Add a new employee. इसके लिए अगर मुझे stored procedure लिखना है, so create procedure add new EMP. So we don't have to pass the ID, we just have to pass the name. So @enm varchar 20 comma @sal float. Then we want the location @lucy varchar 20. Then we need the DID @DID int @mgr int. Insert into EMP ename comma salary comma location comma DID comma manager values @enm @sal @loc @did @mgr. ठीक है, everybody is okay with this? We simply created one stored procedure inside which I have written the insert statement. Now let's execute the stored procedure. So add new EMP. So when I call this, I need to pass the value for the employee. So employee is suppose Rima. Then the salary is suppose like this. Location is say Nasik. And department ID is 101. Manager is suppose 3. One row affected. Now let's test this. So can you see 14 Rima, this. Okay? Everybody okay with this stored procedure? Now this stored procedure we are going to call using C#. Okay? So for that, SQL command cmd is equal to, you create the object of SQL command c dot connection is equal to con. Now this is another technique. अभी पहले केस में हमने क्या किया था, डायरेक्टली पैरामीटर पास किया था, पर आप ऐसे एज अ प्रॉपर्टी भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो. Command, there is something called as command type. Can you see this option? Stored procedure.
So we are telling the SQL server that we are telling C#, we are going to execute a stored procedure. Okay. And then we have to specify the command text. Here the command text is the name of the stored procedure. तो अभी हमने जो name बनाया है वो name यहाँ पे use करना है. Understood? Command type is stored procedure. Then command text needs to be name of the stored procedure. After this, now you will observe 1, 2, 3, 4, 5. 5 parameters are there. So we need to create the 5 parameters here. So SQL parameter चार थे ना कि 5 थे 1 2 3 4 5 alternatively you may pass this information in the constructor as well. तो यहाँ पे देखो पैरामीटर नेम और उसका वैल्यू और क्या क्या ऑप्शन है अपने पास डेटा टाइप डीबी टाइप सोर्स कॉलम नेम ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है तो कुछ चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल हियर आई माइट राइट मैं कॉपी कर लेती हूँ तो मुझे याद रहेगा so first parameter is at the rate enm एंड उसकी वैल्यू जो मुझे पास करनी है फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पास अभिषेक then parameter 2 is sal at the rate sal so what value we want to pass here say 32k then the next parameter is at the rate did and the value I'm going to pass is location ना तो location में मुंबई the next parameter is at the rate did so department id is suppose 102 and the next parameter is at the rate mgr and the value is suppose 3 again so at the rate location yes so now we have to go for cmd dot parameters dot add p1 आप इसको ना एज अ कलेक्शन भी बना के एक ही बार में ऐड भी कर सकते हो दैट इज अनदर ऑप्शन अवेलेबल आई एम जस्ट गोइंग फॉर द बेसिक अप्रोच सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ये सबको समझ में आ गया एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट नाउ वी आर गुड टू गो है ना तो कनेक्शन बता दिया अभी आपने को क्या करना पड़ेगा कॉन डॉट ओपन देन cmd dot execute non query because the stored procedure is for insert so again it goes in the execute non query category and close तो ये रिटर्न करेगा so we might again go for the count I'm just showing the message that is success so let's execute this so we can see the success message here now let's execute
select star from employee. You can observe here Abhishek has got successfully added. समझ में आया सबको? So this was for execute non-query category. What if I want to go for the execute scalar category? So I will have to create a stored procedure for that first of all. So create procedure get emp name suppose, and here I am passing the id as a parameter. Select ename from emp where eid is equal to @id. This object is already okay. So I have created a new stored procedure called as get emp name. So first of all, always you should test it, okay? Get emp name. नहीं तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा एरर यहाँ है stored procedure में है. So always you should test it. So my stored procedure is working fine. अब अगर प्रॉब्लम आया तो हमको श्योर रहेगा कि C# में प्रॉब्लम है. Stored procedure is fine. Understood? Whenever you create a stored procedure, make sure you test the stored procedure first, then go for this option. तो अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, चलेगा? So this was for non-query option. Copy. So once again, first we specify the connection string and then we create the connection object, command object, connection. So type is stored procedure. cmd.command text is, now here the name of the stored procedure is get emp name. So specify get emp name. Now only one parameter is needed here. So ये सब नहीं चाहिए. The name of the stored procedure is id. We have to pass the id over here. So for example, let's pass 2 only. So only one parameter we need to add. Now, even though it is a, हाँ अभी ये कौन सा कैटेगरी में आएगा? Scalar. So we have to use execute scalar. And we know that it is going to return a string. So that's why we will call the toString method. Okay. So now it is working fine. Let us now do it in another way. अभी क्या हुआ कि हमने execute scalar use किया and it is returning. Now let me do the same thing in a little bit different way. Let me have a stored procedure called as create emp name sp. Now see what I'm going to do is instead of putting it instead when we execute this stored procedure is returning that data, right? ename अपने को मिल रहा है, वो रन हुआ तो अपने को ename मिल रहा है. अभी हम उसको क्या करेंगे? We'll put it as output parameter. So what I have to write here? @nm like this. समझ में आ रहा है?
Now I'm introducing the output parameter. What if your stored procedure has output parameter? तो हम कैसे करेंगे? So let's first of all create the stored procedure. Done. Now how to execute? Execute emp name sp. Pass the id as 1. हाँ, आपको ये मैंने सिखाया था. Declare @nm varchar 20. So you have to pass @nm as output. Print @nm. You can see the output here, Ajay. ये वाला क्लियर है ना? सबको मैंने सिखाया था आउटपुट पैरामीटर इन स्टोर्ड प्रोसीजर. आर यू ओके विद दिस? Now the same thing we have to run from the C# application. So coming back to our C# application, here let me write it as scalar demo. Name of the stored procedure. Okay, so in this scenario, how many parameters we are creating? 2 parameters. तो अब यहाँ पर हम 2 parameters लेंगे. इस parameter का नाम क्या है? @nm. So just write here nm. Now we are not going to pass the value because it is an output parameter. So what you have to do is p2 dot, there is something called as direction. Dot, can you see this? Output. If you are passing only the name, actually हम value pass करते हैं ना, तो वो value से खुद ही type determine कर लेता है. But if you don't pass the value, then how it will know the type? So we have to mention the type if I'm not passing the value. But now this is for output. We are creating it for output parameter. For output parameter. तो आउटपुट पैरामीटर के लिए हमें क्या करना होगा? p2 डॉट डायरेक्शन एंड हियर वी आर मेंशनिंग दैट द डायरेक्शन इज आउटपुट. सॉरी, यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया ना. स्ट्रिंग, एक काम करती हूँ, इसको अलग अलग ही रखती हूँ. p2 डॉट पैरामीटर नेम इज इक्वल टू @nm. p2 डॉट db type now as I have already mentioned, जब भी आप size use करोगे, so make sure you mention the size. Size is important. नहीं लिया ना तो वो one character समझता है. So even if it is returning, it will simply return one character, not the whole string. So you have to mention the size here. And please make sure you do this part. Direction is output. Then only it will behave as output parameter. So now we add the two parameters p1 and p2. अब हम इसको execute जब करेंगे, so it will be considered as execute non-query. क्यों non-query? Because we are not expecting any output out of the stored procedure. वो रन करेगा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं देगा क्योंकि आउट पैरामीटर में डेटा सेव हो गया है. अंडरस्टूड? वी आर यूजिंग p2, राइट? p2 में हमको डेटा स्टोर करके दे दो, कुछ रिटर्न मत करो. So we are not going to return anything. So we are putting it in the category of execute non-query. So now p2 dot simply we can use value. जब वो रन हो जाएगा तो p2 के वैल्यू पार्ट में वैल्यू मिलना चाहिए हमें.
So let's execute this. Can you see the output here, Suraj? आ रहा है समझ में सबको? Did you all understand, everybody? If you all are understanding, can you please type U for understood? And if you want me to repeat, just ask me to repeat. R for repeat type करो. Okay. So I think now everybody is okay with how to deal with stored procedure also. So this was the whole thing about the connected architecture. Shall we proceed further now, everybody? So now we are going to move ahead with the disconnected architecture concept. So I'll be creating a new project for this. So let me close this solution. I'll be creating a new project, but I will be using Windows Forms application. Windows Forms app, ये वाला यूज करना है, ठीक है? So first of all, what I will do is I will just have one button here. You right click on the button, go to properties, and you change the text here. So the text is load data. Remember disconnected architecture concept? सबको याद आ रहा है? ये font ठीक है क्या? बढ़ाऊं? Properties में आपको font size का option मिलता है. So what we have to do in case of disconnected architecture, as I said, हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस में जाना है और डेटाबेस से सारा डेटा लेकर आना है और उसको अपने पास लोड कर लेना है. Then onwards we will start performing the different operations. So what I'll do now is I'll just double click on this. इसको क्लिक करने पे वो कोड अपने को परफॉर्म करना है. So what you have to do now again, अभी ये फिर से SQL कनेक्शन का एरर देगा. So you know now, solution पे राइट क्लिक करो. ऐड नहीं, क्या था, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस. system.data.sql client, this is the one. So using system.data.sql client, and now ये ना आप बार बार टाइप करो. हाँ, डू नॉट कॉपी पेस्ट, ऑलवेज यू ट्राई टू टाइप इट. ये जितना आपको दिमाग में फिट होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? इनिशियल कैटलॉग,
1 minute, students. ओके, सो हाँ, ये अभी तक हम उसको एज अ पैरामीटर पास कर रहे थे. आप कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉन ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. वन मोर थिंग, समटाइम्स एक और चीज अभी याद आई है तो बता दे रही हूँ. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ स्लैश एबीसी ऐसा भी रहेगा. मे बी आई एम जस्ट टेलिंग यू. So sometimes there is a possibility that there might be, when you are typing the data source like this, it might contain a slash. तो अगर स्लैश रहता है ना कनेक्शन स्ट्रिंग में तो ऑटोमेटिक देखो वो एरर दिखा रहा है. इट इज ऑलरेडी डिफाइंड ऐसे बोल रहा है. देखो उसके लिए एरर नहीं दिखा रहा है वो. ये वाला स्लैश नहीं. With some slash, maybe some error might be there. Okay, so if there is a slash, तो एक ऑप्शन है कि अगर स्लैश है ना तो वो 2 बार आप स्लैश दे दो. एक वो तरीका है, या फिर आप यहाँ पर बाहर आके एट द रेट लिख दो. सो इट विल सप्रेस ऑल दी स्लैशेस. ठीक है. मीन्स हम कनेक्शन स्ट्रिंग को बता रहे हैं कि उसको एज अ पाथ एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करो, उसको और इवेलुएट करने की कोशिश मत करो. सो यू माइट जस्ट पुट एन एट द रेट. अभी अपने केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डॉट लिख रहे हैं तो आपको वो प्रॉब्लम आएगा नहीं. बट व्हेन यू गो फॉर रियल लाइफ सिनेरियोज, जब आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर डेटा सोर्स मे कंटेन सम स्लैशेस. वो एस्केप सीक्वेंस जैसा वर्क करता है ना, तो उसकी वजह से एरर आएगा. तो उसको सप्रेस करने के लिए यहाँ पर एट द रेट लिख दो. ठीक है. So this is another way of specifying the connection string. Con dot connection string is equal to constring. SQL command cmd is equal to new SQL command. So here first we are going to use this one. तो हमने suppose लिखा select star from emp comma con. Now, I told you earlier that we have to appoint someone to go to the database and fetch the data, and that data will be stored in our local container. So that local container is called as the data set. SQL data adapter class is needed now. See, if you remember earlier I told you that this is our application. तो अभी क्या करना है अपने को, हमारे एप्लीकेशन में एक कंटेनर होना चाहिए. Some container should be there. So that container is a data set. इसको क्या बोलेंगे हम, data set. Now we have to send somebody to the database to fetch the data. तो एक somebody मतलब कोई एक है, उसका नाम है जो ये लेकर आएगा, इसका नाम है data adapter. So it is the job of data adapter to go to the database and fetch the data. जब हम इसको भेजेंगे तो ये हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, वेयर इज द डेटा.
अगर उसको आप बोल रहे हो जाओ डेटा लेकर आओ, तो पहला क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, वेयर इज द डेटा. सो हाउ यू विल गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कौन बताएगा, वेयर इज द डेटा. Who has the information about where is the data? Machine. मशीन नहीं, क्लास. कौन सा क्लास बताएगा? Which class? Here you tell me which object has this information. It is the connection object. कनेक्शन स्ट्रिंग हमने किसको दिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को दिया. तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को पता है वेयर इज द डेटा. कैन वी से लाइक दिस. सो इसको क्या चाहिए, डेटा अडेप्टर को क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए. तो यहाँ कनेक्शन ऑब्जेक्ट चाहिए. सो कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसको देना है. फिर वो डेटाबेस पर चला जाएगा. In the database there are several tables available. So next question is which data you want. क्या चाहिए तुमको डेटाबेस में से, वो कैसे पता चलेगा. How you will come to know. अभी इस कोड को देखो, हम कौन सा डेटा मंगवा रहे हैं. What are we trying to fetch from the database. EMP डेटा, ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉय. वो किस ऑब्जेक्ट के पास है, कौन सा डेटा चाहिए, विच ऑब्जेक्ट हैज दैट इंफॉर्मेशन. इट इज द कमांड ऑब्जेक्ट. एवरीबॉडी इज गेटिंग इट. अगर मैंने तुमको बोला जाओ डेटाबेस से डेटा लेकर आओ, तो तुम पहले पूछोगे ना वेयर इज द डेटा. तो हमें डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सब बताना पड़ेगा. प्लस आफ्टर दैट यू विल आल्सो आस्क मैम व्हिच टेबल्स डेटा यू वांट. So that information is present in SQL command. So when you create the data adapters object, you have to pass this command. Command pass किया अगर, तो command के पास command भी है और connection भी है. So indirectly we are providing all the information to data adapter. Can we say like this? Data adapter को command दिया, command के पास connection है ना. So indirectly it is getting all the information, which data and from where to bring. So where is the data, which data, which data. This information we get from command. So to this SQL data adapter we need to attach the command object. कमांड ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच करो. ऑलरेडी हमने कमांड ऑब्जेक्ट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट दे रखा है. सो इनडायरेक्टली बोथ द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द डेटा अडेप्टर. So that means now this person data adapter is ready to go to the database and fetch the data. Yes or no? उसको अभी सब डिटेल मिल गया है, डेटा कहाँ पे है और कौन सा डेटा मुझे फेच करना है. सो आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ. अब ये डेटा अडेप्टर जब डेटाबेस के पास जाएगा, फ्रॉम देयर इट विल फेच ऑल द डेटा एंड इट हैज टू स्टोर इट इन आवर कंटेनर. तो वो कंटेनर कौन सा है जहां उसको डेटा स्टोर करना है. This is the container. Data set is the container. Okay. So data set is the container to hold data from database. It is a very amazing container and very powerful. वो हम धीरे धीरे explore करेंगे. ठीक है. So da dot simple, there is a fill method. You pass ds as a parameter. So writing this step is enough to load the data into the data set. Now what we will do is we will just generate one message. Message box dot show data loaded. एक मैसेज हम दे देते हैं. Now we are not going to use console.writeline because it's a Windows Forms application. इसलिए हमने क्या लिखा, message box dot show. So close this, come back over here, Control F5 to execute. तो अभी रन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा लोड हो रहा है या नहीं. So click over here, data loaded. So there is no error in my program and data got loaded successfully. Till this point are you clear? इसको डबल क्लिक करो, आपको कोड व्यू मिल जाएगा. ठीक है.
वही जो सी शार्प में कोड लिख रहे थे वही अभी हमने विंडोज फॉर्म्स में लिख दिया। तो अभी एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, है ना। हम डेटाबेस कनेक्टिविटी भी सीख रहे हैं और थोड़ा सा विंडोज फॉर्म्स भी सीख ले रहे हैं, ठीक है। इज इट ओके एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डेटा सेट। दिस डेटा सेट, अभी मैंने जो यहाँ पर क्वेरी लिखा है, क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। इंटरेस्टिंग थिंग इज यू कैन आल्सो राइट हियर सेमीकोलन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी। ऐसे आप मल्टीपल टेबल्स का डेटा भी फेच कर सकते हो फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में जा ही रहे हो ना, तो एक डेटा क्यों, एक टेबल का डेटा क्यों? यू मे फेच डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स एज वेल, बट विल नॉट डू इट राइट नाउ, बाद में वो सिखाऊंगी। अभी सिंपल में करते हैं हम। सो दिस data set is capable of storing multiple tables। यहाँ पर उसके पास आप multiple tables store कर सकते हो। So in simple words, what is data set? So data set is a collection of data tables। उसके अंदर क्या आता है? data table आता है। So these two units that you observe here, these are called as data tables। Understood? अब उसमें हम, आपको पता है कि टेबल है तो टेबल में रोज और कॉलम्स होते हैं। सो दिस डेटा टेबल हैज गॉट सम रोज एंड कॉलम्स। सो नाउ दीज रोज दैट यू ऑब्जर्व, ये जो रोज हैं इनको कहा जाता है डेटा रो, एंड दीज कॉलम्स दैट यू ऑब्जर्व हियर, दे आर कॉल्ड एज डेटा कॉलम्स। Understood? So data set is a collection of data table, and data table is a collection of data row and data columns। Clear है? Is that clear everyone? So now, yes, can I see C for clear? हाँ, अब क्या हुआ, हमने तो लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वो डेटा डेटाबेस में से आएगा, डेटा सेट में स्टोर होगा। आई टोल्ड यू डेटा सेट इज अ कलेक्शन। आप उसको ऐसा समझो कि वो एक एरे है। सो इफ यू सी द एरे कॉन्सेप्ट, अगर मैंने ARR लिखा, there is an array, if I write ARR, what does ARR indicate? It indicates all elements, correct? लेकिन मुझे अगर मेरे पहले एलिमेंट से बात करनी है तो हम क्या लिखते हैं? ARR of 0, करेक्ट? दिस विल रेफर टू द फर्स्ट एलिमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर कोई एरे है और आप ARR लिखते हो, so ARR will refer to all the elements, but I'm not talking about all the elements. I want to fetch the first element, so I will just write ARR 0. Similarly, our data set that we are using, data set is a collection of data tables। उसमें बहुत सारे tables हो सकते हैं। मुझे कौन सा चाहिए? पहला। So data ds dot tables square bracket 0, this will refer to the first table। डेटा सेट के अंदर क्या है? डेटा टेबल्स है, तो डेटा टेबल स्क्वायर ब्रैकेट 0 विल गिव अस द फर्स्ट टेबल। ये टेबल अपने को यूज करना है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये डिजाइन वाले टैब में आ गए हम। नाउ फ्रॉम द टूल बॉक्स लेट्स हैव अ ग्रुप बॉक्स। ये थोड़ा सा डिजाइन के लिए है। And here, can you see this? Data grid view control is there. So drag and drop this data grid view control. ग्रुप बॉक्स के प्रॉपर्टीज में जाकर
there is a text property. And below this, I'm also going to add a button. So again, I'm using the show data. Now double click on this. अब क्या होगा, ये जो SQL कनेक्शन वगैरह हमने बनाया है, these are local variables here. So the moment this function is over, can I say all these local variables will be deleted? And I need them throughout the application. मुझे तो उसकी जरूरत बार बार पड़ने वाली है. तो हम क्या करेंगे, we don't want them to delete, so we'll create all the references here. ये सब हम यहाँ बना के रखेंगे so that they become global. Now we just have to do the initialization part over here. यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम करेंगे. ये बन गया ना, तो अब इधर जाके हम उसको यूज कर सकते हैं. सो डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स is equal to ds and data grid view dot data member. कौन सा उसमें से अपने को शो करना है? सो ds dot tables 0 dot टेबल नेम ऑप्शन इज देयर, वी स्पेसिफाई द नेम कि ये नाम का टेबल अपने को लोड करना है. सो नाउ लेट मी एग्जीक्यूट दिस एंड शो यू द आउटपुट. सबसे पहले लोड डेटा पे क्लिक करो. सो डेटा लोडेड सक्सेसफुली. नाउ क्लिक ऑन शो डेटा. कैन यू सी दिस एवरीबॉडी? सो डोंट यू थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग नाउ? अभी मजा आ रहा है? ब्लैक स्क्रीन से छुट्टी मिली. थोड़ा हमारी जिंदगी कलरफुल हो गई है. इसको आप राइट क्लिक करो और हाँ सॉरी, यहाँ में डिजाइन में जाओ, इसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड कलर, बैक कलर ऑप्शंस है, थोड़ा सा आप कलरफुल बना सकते हो. ठीक है. सो नाउ आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय. आज कोई पीसी छोड़ने नहीं वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है. यस एवरीवन, मजा आ रहा है सबको? एम फॉर मजा आ रहा है टाइप करो. I enjoy teaching it, so definitely I feel you all would definitely enjoy working on it. ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया. लोड डेटा से हमने क्या किया, डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहे हैं, लोड कर रहे हैं किसमें, डेटा सेट में. डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स. फ्रॉम दैट वन ऑफ द टेबल विल बी डिस्प्लेड इन द ग्रिड. ग्रिड इज केपेबल ऑफ शोइंग वन डेटा एट अ वन टेबल एट अ टाइम. देखा आपने अभी, एक ही टेबल को वो लोड कर सकता है. तो कौन सा टेबल लोड करना है ये तुम्हारे ऊपर है. तो अभी हमने एम्प्लॉय टेबल यूज किया, ये हो गया. अगर आप इसको फिर से रन करो, बिना अगर लोड डेटा पे क्लिक नहीं किया, सो विल अवर डेटा सेट हैव द डेटा? नो. सो इफ आई क्लिक ऑन शो डेटा, इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन. गॉट इट? क्योंकि डेटा अभी आया नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम देगा अपने को. तो ये याद रखना है. आई होप एवरीबडी ओके विद दिस पार्ट. All right. Now, once we have the data, we are interested in performing a set of operations. So, the first operation that I want to do is I want to search for a particular employee. ये जो डेटा सेट है उसमें मुझे कोई तो एम्प्लॉय को ढूंढना है, सर्च करना है. सो लेट्स हैव अ ग्रुप बॉक्स over here and some text I want to attach, so I'll use a label here. Enter
employee ID, and then I'm going to use a text box. And we want to have a button. कॉमन कंट्रोल्स पे क्लिक कर दो तो ज्यादातर आपको कॉमन कंट्रोल्स मिल जाएंगे. गेट नेम. तो वो जो नेम हम ढूंढने जा रहे हैं वो नाम हम यहाँ पर एक लेबल में शो करना चाहते हैं. सो लेट्स यूज वन लेबल. एज ऑफ नाउ आई विल रिमूव द टेक्स्ट. मतलब शुरू में टेक्स्ट मत दिखाओ. तो टेक्स्ट को लेबल 2 के टेक्स्ट को ब्लैंक कर दिया. ब्लैंक कर दिया तो वो यहाँ दिखेगा नहीं, बट इट इज प्रेजेंट देयर. गॉट इट एवरीवन? आई एम गोइंग टू पास द आईडी हियर, और वो आईडी के बेस पे मुझे नेम को सर्च करना है. किसमें? डेटा सेट में ढूंढना है. ठीक है? गेटिंग इट एवरीवन? सो डेटा, sorry, ds dot tables 0 dot, there is a method dot rows dot find. okay, हाँ, rows, सारे rows के अंदर find method एक है. So if you observe, what is the parameter we need to pass here? It asks for the key, and that key is the primary key. समझ रहे हो? There is a built-in method ds dot table 0. That is the first table, right? उसके अंदर हमने हमारे पास क्या है? रोज है. रोज में फाइंड मेथड है और पास क्या करना है? प्राइमरी की. सो प्राइमरी की वी हैव इन अवर टेक्स्ट बॉक्स. सो टेक्स्ट बॉक्स 1 dot text will give us the primary key. So what this is going to return? इसका मतलब क्या हुआ? ये आप ऐसे समझ लो कि हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं. select star from emp where eid is equal to 1. So what is the result of this query? Only name, Dhaneshwar? The entire row. ठीक है Dhaneshwar? And how many rows? One row or multiple rows? One row, right? So the return type of this method, ये देखो find method का return type ऐसे क्लिक करोगे ना दिखाई देगा. क्या दिख रहा है? Data row. I hope that makes sense to everyone. It is going to return one row. तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? Data row, dr, like this. It returns one row, works on primary key. It only works on text में T capital. Okay, so we got the row. वो जो डेटा रो आएगा हमारा, उसमें से जो नाम है, नाम 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 कहाँ गया? नाम कौन सा? 0 1 वाले लोकेशन पे नेम है. सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, इफ dr नॉट इक्वल टू नल. ऐसा भी हो सकता है ना कि वो रिकॉर्ड हो ही ना मेरे पास. सो इन दैट केस इट विल रिटर्न नल. सो इफ इट इज नॉट नल, then label 2 dot text is equal to dr square bracket 1 dot to string. वो ऑब्जेक्ट में रहता है, हाँ, तो उसको to string लगता है. So let's execute this code and test it. अभी सब कुछ अभी डेटा सेट पे करना है. Everything we, whatever operation you want to perform, you'll be talking to the data set. So first step is load the data. Second step we can do is show data. अब आप ID पास करो, that is सीमा suppose. हाँ, तो अभी एक मैसेज आया. Interesting. What is the message? Everybody read the message. Table doesn't have a primary key.
पर हमने जो टेबल बनाया था एम्प्लॉय टेबल, उसमें प्राइमरी की है या नहीं है? It is there, right? But this application is telling me that no, your table doesn't have a primary key. So what exactly happens in this scenario? जब हम डेटाबेस से डेटा लेकर आते हैं, so when we go to the database and we fetch the data and store into the data set, it copies only the data. It doesn't copy the other information like the primary key, foreign key. वो information copy नहीं होती है. That is why it is telling me कि data set में तो कोई primary key नहीं है. That is why we are getting this error. Understood everyone? I am repeating this. When we ask data adapter to go to the database, it will come back and it will try to store the data into the data set. Data set will have the data, but it will not have the primary key or foreign key information. That is the problem. ठीक है? Problem समझ में आया सबको? So we have to tell the data adapter. अभी हमको फिर से डेटा अडेप्टर को बोलना पड़ेगा, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सिर्फ डेटा लेकर आ रहे हो, डेटाबेस से सब कुछ लेकर आओ. सो वी हैव टू राइट हियर da डॉट missing schema action is equal to missing schema action add with key. जो भी मिसिंग पार्ट है वो add with key, मतलब की वाला भी पार्ट लेकर आओ. Now let's execute this code again. Load data, show data, and now if I press here you can see Suraj. ठीक है? Understood everyone? Interesting now? So this is to get all the keys information along with data. So everything we are going to get it. Yes, अभिजीत, तुम्हारा क्विज रेडी है क्या? यस मैम. लेंगे अभी? ओके मैम. Okay. So we'll do the quiz part now. Entire screen. मैम वही प्रॉब्लम आ रहा है. अरे क्यों आ रहा है? किसी का हेल्प ले लो ना. ठीक है, बाद में कल करो, छोड़ दो अभी. But take somebody's help, na? Okay, somebody Okay, from ma'am. the team will help him after the session. Guide करो उसको, कल वो लेगा quiz. ठीक है? Who will help him? Nobody will help him. Sanju will help. संजू करेगा मैम. Sanju is the don. Everyone wants help from Sanju. Shreyas is ready to help. ओके मैम. ठीक है. Okay, Sanju, just coordinate with him and help him out. Okay. Yes. So everyone understood today's session? And I hope you all have enjoyed also. मजा आ रहा है अभी? Database connectivity is actually the most interesting part. So I hope you all should enjoy it. Of course, थोड़ा काम बढ़ गया है तुम्हारा, तो करना है, लेकिन मजा भी आएगा जब तुम करोगे. Okay, now one important announcement. Saturday in the first half, 9:30 to 11:30, we will be having the session. Then 12:30 to 2 will be your test on SQL server. Entire SQL server. Okay. So once the test is over, then I will give you assignment for radio.net. Okay. Every week समझ लो आप, सैटरडे को एक टेस्ट रहेगा ही.
ठीक है. So next week we will have a test on ADO.NET. Done? So I think we should stop here for today. नहीं तो ज़्यादा overloading हो जाएगा. एक मिनट, एक ही चीज और बता देती हूँ. जाने दो, कल बताती हूँ. नाम मेरा को तुमने बोला रन हो गया. वैष्णवी, you said it executed, right? नहीं मैम, वो कनेक्शन हो गया था कल, बस ये जो कोड है वो रन नहीं हो रहा है, ये जो एरर दिखा रहा हाँ है हाँ, वही ठीक दिखा है रहा ठीक है, शो करो. है. ये कोड था और एक मिनट दे दो. हाँ मुझे. yes, डेटा सोर्स डॉट इनिशियल कैटलॉग कनेक्शन इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी. ओके. कम यस मैम. मैनेजमेंट स्टूडियो. ओके. हाँ ये शो द डेटा, एक्सपैंड द डेटाबेस टैब. एम्प्लॉय था. राइट. हाँ राइट. अच्छा, डेटाबेस का नाम एम्प्लॉय है बेटा. नहीं मैम, टेबल का भी नाम एम्प्लॉय ही है. हाँ, ठीक है, लेकिन तुमने डेटाबेस का नाम भी एम्प्लॉय रखा है. हाँ. अभी वहाँ पे ईएमपी लिखो. एक काम करो ना, वो ईएमपी को राइट क्लिक करो. डेटाबेस का इसको नाम है ना जो, हाँ उसको राइट, हाँ राइट क्लिक करो. रीनेम ऑप्शन आ रहा है कि, हाँ देखो रीनेम ऑप्शन है नीचे. कनेक्शन एंटर करो. ठीक है, अभी ये C# एप्लीकेशन को रन करो. नहीं, काउंट तो नहीं आ रहा है ना इसको. कनेक्शन नाम से प्रॉब्लम है क्या? एक काम करो ना, इसको बंद करो और नाम कुछ और लो ना. अरे यहाँ नेम स्पेस नाम का नाम भी कनेक्शन, सब जगह कनेक्शन कनेक्शन का. ओके, वो इसको चलेगा. चेंज कर दूं क्या? नहीं, इसको नहीं, डेटाबेस नाम कुछ और लो ना. माई कनेक्शन ऐसा कुछ, माई कॉन ऐसा लिख दो. माई डीबी समथिंग कंपनी. हाँ बेस्ट. और यहाँ पर इनिशियल कैटलॉग में कंपनी लिखो. ओके, एक बार. हाँ ठीक है, अभी कंट्रोल F5 करो, एग्जीक्यूट करो. ठीक है, इसको बंद करो. टाइम दे देते हैं. अब एक काम करो, ये जो लाइन नंबर 14 है ना, वहां पे कर्सर क्लिक करो. लाइन नंबर 14 पे लाओ और कौन सा F9 प्रेस करो. F9. अरे F9. एक मिनट ना, हाँ. स्क्रीन नहीं बंद हो गया था. कंट्रोल दबा के करना है क्या F9? नहीं नहीं, नॉर्मल F9 फंक्शन की. ये F9 तो किया तो इसका मेरी ये उधर. स्क्रीन बंद तो हो रहा है मैम इसका, मेरा. अच्छा, हाँ. ब्रेक ब्रेक पॉइंट के लिए क्या है? F9 ही है ना. हाँ. F9 ही है. ठीक है, वहां पे क्लिक करके भी आएगा.
वो एकदम लाइन 14 लिखा है ना, उधर जाओ, एकदम लेफ्ट मोस्ट में जहाँ 14 लिखा है उसके ऊपर क्लिक करो। उधर क्लिक करो तो ब्रेक पॉइंट आना चाहिए। ऐसा क्लिक करो ना 14 के ऊपर, एक छोटा सा लेफ्ट क्लिक। किया मैंने, प्लेस किया। ब्रेक पॉइंट ठीक है। बिल्ड में जाओ, डिबग में जाओ, डिबग में ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखो टॉगल ब्रेक F9 ही है, F9 प्रेस, हाँ उस पर क्लिक करो। हाँ आ गया ना। अभी वो क्या है तुम्हारा कनेक्शन, उस पर क्लिक करो, रन करो, मतलब उसको ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना। हाँ हाँ, नाउ प्रेस F10, धीरे धीरे प्रेस करना, F10 प्रेस करो। ये F10 पे ये आ रहा है, स्क्रीन शुरू हुई है। अच्छा एक मिनट, फिर से डिबग में जाओ। क्या है, स्टेप ओवर F10 ही है उसको, हाँ स्टेप ओवर पे क्लिक करो। फिर से उसी पे जाओ, डिबग में जाओ, स्टेप ओवर पे क्लिक करो। फिर से, फिर से, फिर से, network related or instance specified error occurred while establishing the server was not found or not accessible. Verify the instance name is correct or not. ठीक है, इसको क्लोज करो। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाओ। मैंने सर्वर नेम कॉपी पेस्ट, हाँ यस वही कर रही हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करो, ऊपर ऊपर और ऊपर, थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ हाँ, डेटाबेस इंजन, कॉपी दिस होल थिंग, ये पूरा चीज कॉपी करना है। हाँ हाँ, कॉपी किया। यस मैम। हाँ, अभी आ जाओ सी शार्प में। हाँ, वहाँ पे जो डॉट लिखा है ना उसको हटा के जो अभी तुमने कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट करो। हाँ, और बाहर देखो डेटा सोर्स के पहले @ लिखो, अभी जैसे मैंने बताया था। नहीं उधर नहीं, लेफ्ट मोस्ट। हाँ, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के पहले इन्वर्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेटा सोर्स लिखा है ना, वहाँ पे @ लिखो। नहीं, और पहले, ना 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 उधर नहीं, डेटा सोर्स के पहले, इन्वर्टेड कॉमा के पहले, हाँ वहाँ पे। हाँ, अभी डायरेक्ट कंट्रोल F5 करो तो मोस्टली हो जाएगा। डायरेक्ट रन करो, उसको करोगे तो फिर ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा। ये बंद कर दूं क्या इसका ब्रेक पॉइंट? नहीं चलेगा। डिबग, हाँ डिबग पे क्लिक करो, कंटिन्यू विदाउट डिबगिंग ऑप्शन, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। हाँ यार कुछ तो आ रहा है, कनेक्शन टाइम्ड आउट। इतना छोटा एरर मैं पढ़ नहीं पा रही। बड़ा करो किसको? अरे बाप रे। क्या है, लाइन नंबर 18 कॉन डॉट ओपन में एरर है, उसको बंद करो, विंडो को बंद करो। डेटा सोर्स इज इक्वल टू एसक्यूएल एक्सप्रेस। सिक्योरिटी का S कैपिटल लिखो, तो इनिशियल कैटलॉग में C कैपिटल लिखो।
इनिशियल secure. कैटलॉग लिखा है ना, हाँ हम्म, उसको सी कैपिटल करो, सिक्योरिटी का एस कैपिटल लिखो, और थोड़ा आगे ले जाओ तो ट्रू सही लिखा है कि नहीं। कंपनी का भी सी कैपिटल लिखो, मैं वो उधर स्मॉल ही दिया था। स्मॉल ही दिया गया, हाँ फिर ठीक है रहने दो। ठीक है, अगेन डीबग, कंट्रोल F5 करो, डीबग में जाओ और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कॉन्सेप्ट। वही आ रहा है। ये कोड कॉपी करके मुझे इसमें दो, तो चैट बॉक्स में दो। ये नहीं सी शार्प का कोड मैं मेरे एंड से टेस्ट करती हूँ, और तुम्हारा कनेक्शन का ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, मैं टेस्ट करती हूँ, ओके चलो, बताती हूँ। थैंक यू मैम। ओके वेलकम। चलो विल स्टॉप हियर, कल देखते हैं एक बार और। हाँ वैष्णवी, एक काम और करो तुम, जब तक नया डेटाबेस बना के भी एक बार टेस्ट करके देखो। हाँ, दूसरा कोई डेटाबेस बना के टेस्ट करके देखो।